जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्र संहिता अथ षड्विंशोऽध्यायः। सूत उवाच एवं कृते तु ऋषिणा सस्त्रिकेन द्विजा शिव आविर्बभूव स शिव प्रसन्नः स गणस्तदा। अथ प्रसन्न स शिवो वरं ब्रूहि महामुने प्रसन्नोऽहं सुभक्त्यात् इत्युवाच कृपानिधि। तदा तत्सुन्दरं रूपं दृष्ट्वा शम्भोर्महात्मनः प्रणम्य शङ्करं भक्त्या स्तुतिं चक्रे मुदान्वितः। स्तुत्वा बहु प्रणम्येशं बद्ध्वाञ्जलि पुटस्थितः। निष्पापं कुरु मा देवा ब्रवीदिति स गौतम इत्याकर्ण्य वचस्तस्य गौतमस्य महात्मनः। सुप्रसन्नतरो भूत्वा शिवो वाक्यमुपाददे। शिव उवाच धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि निष्पापोऽसि सदा मुने। एतैर्दृष्टैः किल त्वं च छलितोऽसि खलात्मभिः। त्वदीयदर्शनाल्लोका निष्पापाश्च भवन्ति हि। किं पुनस्त्वं सपापोऽसि मद्रक्तिनिरतः सदा। उपद्रवस्त्वयि मुने ये कृतस्तु दुरात्मभिः। ते पापाश्च दुराचार हत्यावन्तस्त एव हि। एतेषां दर्शनादन्ये पापिष्ठा सम्भवन्तु च। कृतघ्नाश्च तथा जाता नैतेषां निष्कृति क्वचित्। सूत उवाच इत्युक्त्वा शङ्करस्तस्मै तेषां दुश्चरितं तदा बहुवाच प्रभुर्विप्रा सत्कदोषस्तु दण्डद। सर्वोक्तमिति स श्रुत्वा सुविस्मितमना ऋषि सुप्रणम्य शिवं भक्त्या साञ्जलि पुनरब्रवीत्। गौतमुवाच ऋषिभिस्तेर्महेशान् उपकार कृतो महान्। यदेवं न कृतं तैस्तु दर्शनं ते कृतो भवेत्। धन्यास्ते ऋषयो येस्तु मह्यं शुभतरं कृतं। तद्दुराचरणादेव मम स्वार्थो महान्भूत। सूत उवाच इत्येवं तद्वच श्रुत्वा सुप्रसन्नो महेश्वर गौतमं प्रत्युवाचाशु कृपादृष्ट्या विलोक्य च। शिव उवाच ऋषिर्धन्योऽसि विप्रेन्द्र ऋषिश्रेष्ठतरोऽसि वै। ज्ञात्वा मां सुप्रसन्नहि विष्णु त्वं वरमुत्तमम्। सूत उवाच गौतमोऽपि विचार्येवं लोके विश्रुतमित्युत। अन्यथा न भवेदेव तस्मादुक्तं समाचरेत्। निश्चित्यैवं मुनिश्रेष्ठो गौतमः शिवभक्तिमान् साञ्जलिर्नतशीर्षो हि शङ्करं वाक्यमत्रवित्। गौतमुवाच सत्यं नाथ ब्रवीप्सि त्वं तथापि पञ्चभिः नान्यथा भवतीत्यत्र यज्जातं जायतां तु तत्। यदि प्रसन्नो देवेश गङ्गाचिदीयतां मम। कुरु लोकोपकारं हि नमस्तेस्तु नमोऽस्तु ते। सूत उवाच इत्युक्त्वा वचनं तस्य धृत्वा वै पादपङ्कजं नमस्कार देवेशं गौतमो लोककाम्यया। ततस्तु शङ्करो देव पृथिव्याश्च दिवश्च स सारं चैव समुद्धृत्य रक्षितं पूर्वमेव तत्। विवाहे ब्रह्मणा दत्तं वसिष्ठं च किञ्चन ततस्मै वत्वाक्शम्भुर्मुनये भक्तवत्सल।
अङ्गाजलं तदा तत्र स्त्रीरूपं भवत्तत्परं तस्याश्चैव ऋषिश्रेष्ठ स्तुतिं कृत्वा नतिं व्यथात्। गौतमुवाच धन्यासि कृतकृत्यासि पावितं भुवनं त्वया मां च पावय गङ्गे त्वं पतन्तं नीरये ध्रुवम्। सूत उवाच शम्भुष्वापि तदोवाच सर्वेषां हितकृष्णुन् गङ्गे गौतमेनं त्वं पावयस्व मदाज्ञया। इति श्रुत्वा वचस्तस्य शम्भुश्च गौतमस्य च उवाचैव शिवं गङ्गा शिवशक्तिर्हि पावनी। गङ्गा उवाच ऋषिं तु पावयित्वाहं परिवारयुतं प्रभो गमिष्यामि निजस्थानं वच सत्यं ब्रवीमिह। सूत उवाच इत्युक्तं गङ्गया तत्र महेशो भक्तवत्सल लोकोपकरणाय हि पुनर्गङ्गा वचोब्रवीत्। शिव उवाच त्वया स्थातव्यमत्रैव व्रजेदावत्कलिर्युग वैवस्वतो मुनिर्देवी ह्यष्टाविंशत्तमो भवेत्। सूत उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य स्वामिनः शङ्करस्य तत् प्रत्युवाच पुनर्गङ्गा पावनी सा सरिद्रा। गङ्गोवाच महात्म्यमधिकं चेत् स्यात् मम स्वामिन् महेश्वर सर्वेभ्यश्च तदा स्थास्ये धरायां त्रिपुरान्तक। किञ्चान्यञ्च शृणु स्वामिन् पुषा सुन्दरेण तिष्ठस्त्वं मत्समीपे वै सगणसाम्बिक प्रभो। सूत उवाच एवं तस्य वचः श्रुत्वा शङ्करो भक्तवत्सल लोकोपकरणार्थाय पुनर्गङ्गा वचोब्रवीत्। शिव उवाच धन्यासि श्रूयतां गङ्गे ह्ययं मिन्नस्त्वया नहि तथापि स्थीयते यत्र स्थीयतां च त्वयापि हि। सूत उवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा स्वामिनः परमेशितु प्रसन्ना मानसा भूत्वा गङ्गा च प्रत्यपूजयत्। एतस्मिन्नन्तरे देवा ऋषयश्च पुरातना सुतीर्थान्यप्यनेकानि क्षेत्राणि विविधानि च आगत्य गौतमं सर्वे गङ्गा च गिरिशं तथा जय जयेति भाषन्त पूजयामासुरादरात्। ततस्ते निर्जरा सर्वे तेषां चक्रुस्तुतिं मुदा करान् बद्ध्वा नतस्कन्धा हरिब्रह्मादयस्तदा। गङ्गा प्रसन्ना तेभ्यश्च गिरिशश्चोच्चतुस्तदा वरं ब्रूत सुरेश्रेष्ठ दध्वो प्रियकाम्यया। देव ऊचु यदि प्रसन्नो देवेश प्रसन्ना त्वं सरिद्वरे स्थातव्यमत्र कृपया न प्रियार्थं तथा नृणाम्। गङ्गा उवाच यूयं सर्वप्रियार्थं च तिष्ठयात्रा न किं पुनः गौतमं क्षालयित्वाहं गमिष्यामि यथागतं भवत्सु मे विशेषोऽस्त्र ज्ञेयश्चैव कथं सुरा तत्प्रमाणं कृतं चेत् स्यात् तदा तिष्ठाम्यसंशयं। सर्वे ऊचु सिंहराशो यदा स्याद्वै गुरु सर्वसुहत्तमं तदा वयं च सर्वे त्वागमिष्यामो न संशयः। 11 च वर्षाणि लोकानां पातकं त्विह शालितं यद्भवेदेवं मलिना स्म सरित्वरे तस्यैव क्षालनाय त्वा
स्यामः सर्वथा प्रिये। त्वत्सकाशं महादेवी प्रोच्यते सत्यमादरात्। अनुग्रहाय लोकानाम् अस्माकं प्रियकाम्यया। स्थातव्यं शङ्करेणापि त्वया चैव सरिद्वरे। यावत् सिंहे गुरुश्चैव स्थास्यामस्तावदेव हि। त्वयि स्नानं त्रिकालं च शङ्करस्य च दर्शनं। कृत्वा स्वपापं निखिलं विमोक्ष्यामो न संशय। स्वदेशांश्च गमिष्यामो भवच्छासनतो वयं। सूत उवाच इत्येवं प्रार्थितस्तैस्तु गौतमेन महर्षिणा। स्थितोऽसौ शङ्करप्रीत्या स्थिता सा च सरिद्वरा। सा गङ्गा गौतमी नाम्ना लिङ्गं त्र्यम्बकमीरितं। ख्याताख्यातं बभूवाय महापातकनाशनं। तद्दिनं हि समारभ्य सिंहस्थेव बृहस्पतो। आयन्ति सर्वतीर्थानि क्षेत्राणि देवतानि च। सरांसि पुष्करादीनि गङ्गाद्या सरितस्तदा। वसुदेवादयो देवा सन्ति वै गौतमी तटे। यावनत्र स्थितानिह तावतेषां फलं नहि। स्वप्रदेशे समायातास् ह्रेतेषां फलं भवेत्। ज्योतिर्लिङ्गमिदं प्रोक्तं त्र्यम्बकं नाम विश्रुतं। स्थितं तटे हि गौतम्या महापातकनाशनं। यः पश्येद्वक्तितो ज्योतिर्लिङ्गत्र्यम्बकनामकं। पूजयेत् प्रणमेत् श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। ज्योतिर्लिङ्गं त्र्यम्बकं हि पूजितं गौतमेनः। सर्वकामप्रदं चात्र परत्र परमुक्तिदम्। इतीवश्च समाख्यातं तत्पृष्ठोऽहं मुनीश्वरा। किमन्यदिच्छय श्रोतुं तद्ब्रूयां वो न संशय। इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहितायां त्र्यम्बकेश्वरमाहात्म्यवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। जय गुरुजी।